In a place where challenges are many and resources few, a quiet force is bringing meaningful change to everyday lives. This is the story of Jeevan Jyoti Jan Kalyan Kendra, a grassroots NGO dedicated to creating opportunities, restoring dignity, and empowering communities through simple yet powerful interventions. हमारी संस्था अत्यंत ग्रामीण पिछड़ी समुदाय, आदिवासी समुदाय, दलित समुदाय के लिए कार्यरत है और हमारी संस्था के द्वारा इन सभी समुदायों के लिए विशेषकर किशोरी महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता के आधार पर कार्य करते आ रही है। बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड में हमारी संस्था ग्रामीण विकास को लेकर के, शुद्ध पेयजल को लेकर के, सामुदायिक शौचालय को लेकर के, स्वच्छता को लेकर के, किशोरी सशक्तिकरण और महिला सशक्तिकरण को लेकर के विगत 2007 से ही कार्य कर रही है और आज के समय में हमारी संस्था 3500 लाभार्थियों को डायरेक्ट लाभ पहुंचाने का काम की है। For many students in rural government schools, basic sanitation facilities were once a distant dream. Jeevan Jyoti Jan Kalyan Kendra stepped in with a clear mission to build toilets in schools. What began as a basic construction project soon became a turning point, especially for girl students. With clean and accessible sanitation, schools are no longer places of discomfort. Dropout rates have declined, attendance has improved, and a sense of dignity now walks hand in hand with education. In villages once burdened by water scarcity, every drop was hard-earned. Today, with solar-powered drinking water systems installed by Jeevan Jyoti Jan Kalyan Kendra, life is changing. Women no longer walk miles, clean water now flows close to home. हमारे यहाँ पलानी में बहुत पानी का समस्या था, लेकिन जब से यहाँ जीवन ज्योति डीप बोरिंग मिला है तब से यहाँ पानी का समाधान निकल गया है। नहीं तो पहले नदी से पानी लाते थे और बरसात में भी बहुत दिक्कत होती थी। स्वच्छ पानी मिलने के वजह से हमारे गांव के लोग और हमारे परिवार के लोग अभी स्वस्थ हैं। For those living with physical disabilities, life's challenges are many, and mobility is often the greatest one. Recognizing this, Jeevan Jyoti Jan Kalyan Kendra distributed mobility vehicles to persons with disabilities. हमें चलने फिरने में काफ़ी समस्या होती थी, जिससे हम रोजी रोटी सही ढंग से नहीं कर पाते थे। तो मुझे जीवन ज्योति जन कल्याण केंद्र द्वारा जो है स्कूटी निर्गत कराया गया, जिससे कि अब हमें चलने फिरने और रोजी रोजगार करने में बहुत ही आसानी हो गया। मैं जीवन ज्योति जन कल्याण केंद्र को दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, जो संस्था द्वारा हमें स्कूटी निर्गत कराया गया और मैं आत्मनिर्भर हूँ और मैं पूरे परिवार को साथ में लेकर के चल रहा हूँ। In its journey to bring people together, Jeevan Jyoti Jan Kalyan Kendra also built a multipurpose community hall. More than just walls and a roof, this space is alive with possibilities. It's a place where people meet, learn, celebrate, and share. From skill-building workshops to cultural programs, the community hall stands as a symbol of unity and shared growth. And in the heart of this work is a special focus on the future, on adolescent girls finding their voices and building their confidence. Jeevan Jyoti Jan Kalyan Kendra organizes regular empowerment meetings for young girls, guiding them through critical topics like health, hygiene, education, and self-worth. These gatherings are safe spaces where questions are welcomed, fears are eased, and dreams are encouraged. Through all its efforts, Jeevan Jyoti Jan Kalyan Kendra proves that real change begins with compassion, and that progress doesn't always arrive with fanfare. It often comes in the form of a clean toilet, a glass of water, a wheel turning freely, a hall filled with laughter, or a young girl standing tall. This is more than an organization, it is a quiet revolution, helping communities write their own stories of hope, strength, and renewal.